and welcome to another episode of Daily Newspaper Analysis. And daily news analysis that we discuss about all the important events, which is very essential for your exam. As we know that in daily news analysis, we discuss about national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, which is very important. And we can see any high court verdict, any case study, any amendments, any bills, which is very important, especially for the law entrance exam. And here's the quote of the day: if your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. And here we have taken initiative questions of the day. So at the end of the session, we'll ask you about 5 questions, 3 to 5 questions. This will help you out that from the newspaper how many questions or what kind of question that can be framed, right? Now we talk about very first news is talking about UCC, which is called Uniform Civil Code. What exactly is UCC and why it is need for the government to implement the UCC? These all things that we discuss about in detail. So if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our PRATHAM Test Prep mentor. So here the talking about why the Uniform Civil Code is required, because as we know that Uniform Civil Code is certain, because irrespective of their caste, creed, religion, different religion have different laws. I'm just telling you the example. As per the Muslim laws, which is called Sharia, tells about once the girl age in the puberty can get married, while Hindu Marriage Act the age should be 21. So this is and a kind of ambiguity, right? So this is why that government want to implement the UCC. So the years of Constituent Assembly discussion that was in 1946 and 1949, the transfer of power, partition and making of nation state, which means that the federal structure should be. And why we had established the Constituent Assembly? Because of the only one reason, because we want to have a country where should be written constitution, and we can say that what is the main purpose of M.N. Roy. The person name is M.N. Roy established the Constituent Assembly idea, because they want to the public consensus, because they just want कि लोगों की क्या राय है, different parts से हमारे representatives थे and princely states, so they just want कि हमारी इंडिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, and the many representatives talks about कि what kind of things it should be, right? So यहाँ पे अगर बात करें इसमें, उस टाइम में many sought the recognition of different in personal law as a secular nation, acceptance of diversity. For some, an unfilled code was a means of creating condition for national integration. So others saw uniformity as a universally of indigenous values. बात करते हैं इसमें यहाँ पे इसके अगर pros and cons के देखिए UCC के. So although leading women members such as Amrit Kaur, Hansa Mehta, Amrit Kaur वहाँ पे राजकुमारी Amrit Kaur was the only person, and she was our first health minister, and इन्होंने हमें एम्स इस्टेब्लिश की थी इन द ईयर ऑफ 1956. द एम्स इन दिल्ली इस्टेब्लिश बाय राजकुमारी अमृत कौर. दैट्स वाई रिसेंटली द 3-4 years back government had changed the name of OPD in Delhi AMC Rajkumari Amrit Kaur OPD. So this is talking about in that time the Constituent Assembly. So although leading women members such as Amrit Kaur and Hansa Mehta strongly advocated for the uniformity law as well as Hindu Code Bill, so the women questions remain incidental to discussions on UCC, unless the discussion was especially on an issue such as women abducted in partition violence. There was an overall poor representation of women as well as women issues. One member थी हमारी रोहिणी कुमारी चौधरी, that is added to a note of regret about the way which women were elbowing out men. This found support from Loknath Mishra, who opined that if women were to compete with men, it would spell the
end of the glorious Hindu civilization. So K.M. Munshi, and who was an influential voice of the assembly in that time, imagine UCC, Uniform Civil Code, as an achievement of modernity, the great good of which he, as a self-professed liberal, was willing to pay the cost. K.M. Munshi ने भी इंडोर्स किया था UCC के लिए. So uniformity therefore represented under modernity, solidarity or tyranny of majority for different members, unlike the polarization visible in the current discussion. बाद में इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में B.R. अम्बेडकर साहब ने भी बताया था कि सम मतलब डिबेट्स में, राइट. So this is all about the things you need to keep in mind. Next one is why there is a controversy on the forest bill. What was the Environment Ministry stand on the issue? Why have suggestion to the Joint Parliamentary Committee regarding the changes not been taken on board? And is the bill diluting the 1996 Govardhan Thiruvannamalai judgment? So recently क्या हुआ इसमें? The Forest Conservation Amendment Bill 2023 is likely to be tabled in the monsoon session of Parliament from July 20th को रखी जाएंगी, right? So ये क्या है हमारा, इस बिल में क्या चीज़ें मेंशन है and why the tribal people were against this? See, in short समझो कि जो ट्राइबल स्टेट्स हैं गवर्नमेंट वांट कि वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, ठीक है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश है सो दैट वी कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, राइट. एंड ऑब्वियस द यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनका मेन लाइवलीहुड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट लैंड. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, बाउंड है इन चीज़ों के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट वांट कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सो दैट कि हम एम्प्लॉय जो यूथ है उसको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें. ट्राइबल कहते हैं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो जॉब है उसका क्या होगा, मतलब विच मीन्स दैट आवर लाइवलीहुड इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट लैंड. इस बिल में क्या बात की गई? द बिल सीक्स टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. क्या हमारा इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसको अब समझना होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. So this is the legislation enacted to protect India's forest and empowers the central government to regulate the extraction of forest resources from timber and bamboo to coal and minerals. So by industries as well as we can say forest dwelling communities. एक separate act जो था Forest Right Act protect the rights of tribal and forest dwellers depend on the forest for their livelihood. 1951 से 1975 तक, ठीक है, about 4 million hectares of forest land has been diverted for various non-forestry purpose. Non-forestry means forestry purpose से वो यूज़ ही नहीं किया गया. 1951 से 75 तक about 4 million hectares of forest has been diverted, or under the purview of the act only 1 million hectares have been diverted. A sign of this impact is reducing the pace of forest appropriation. फिर भी अगर हम इसमें देखें तो such protection was only available for areas already marked out as a forest in central or state government record. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट दी 1996 में. उन्होंने क्या जजमेंट दी उन्होंने, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हमारी 1996 में. उन्होंने क्या बताया 1996 में एक जजमेंट में कि गोवर्धन त्रिभुवम केस में एक्सपैंड द स्कोप ऑफ सच प्रोटेक्शन अंडर इट इवन एरियाज नॉट नॉर्मली नोटिफाइड एज एन फॉरेस्ट बट कन्फर्मिंग द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट वर प्रोटेक्टेड. सो बाद में इंडिया की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1990 में उसको 1998 में अमेंड की गई, दैट प्रिस्क्राइब अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया टू बी अंडर फॉरेस्ट. Realistically, only 21% of under
21% of under such cover, and it is about 24%. If one also accounts for tree cover outside area under recorded forest plantation occurs, it is to address the latter issue. The Environment Ministry ने बताया like required to this act. Why do these amendments is? Because the reason that इसमें अगर आप देखो, the key changes to act include inserting a preamble that underlines India's commitment to preserving forest and the biodiversity and tackling challenges from climate change, and amending the act of the van which is called संरक्षण एवं संदर्भ, which means यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन को बाद में अमेंडमेंट किया गया, बताया गया कि द एक्ट वुड ओनली अप्लाई टू लैंड्स नोटिफाइड in government record as forest or offer 1980. Forest and land situated 100 km away from international border and to be used for a strategic project of national importance, or land ranging from 5 to 10 hectares for security and defense project. तो ट्राइबल्स कह रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो फॉरेस्ट लैंड है उसको गवर्नमेंट कह रही है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट. So these amendments were necessary in the Environment Ministry view because private parties who wanted to develop plantation in degraded forest or restore tree patches were disincentivized to do so. A private plantation or reforestation piece of land that was officially marked as a forest could be retrospectively unmarked, which means that under the provision of this act, such forcing the developer to such a plantation of to lose rights association with that patch, this was an impediment to India's plans for developing a carbon sink of 3 billion tons by 2030, right. So this was the main crux of the passage. Let's move to the next one. So the next article talking about a novel model to help women power flourish. Mission Shakti एक ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थी फॉर फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन इमेंसिपेशन के लिए, that started 22 years ago in Odisha is set to begin new innings towards a faster growth and bigger benefits for the state of Odisha and its women in particular. इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 2001 में, इसमें मिशन शक्ति को 2001 में लॉन्च किया गया, राइट, with a straightforward vision to alleviate poverty, and a state must build from the ground up, from every home through the homemaker. Mission Shakti organized the state women into cluster and provided platforms that allowed them to grow independently. बाद में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे वो एग्जिस्ट थे ओडिशा में सिंस 1990s में, but never got the attention and institutional support they deserve to transform into and what is being called a silent revolution. So the real stories lies in the identity and respect to dignity of women. It enables women to come out in public space and claim their rightful roles as natural leaders for the community. So basically आपको इसमें the important takeaways for the exam is what is Mission Shakti is, what was the main purpose to launch Mission Shakti, and it was launched in Gujarat state. Next one is talking about ये हमारे Indian Foreign Service Officer है विवेक कदजू, Virtual Summit, Virtual Silence. So basically talking about SCO, which is called Shanghai Cooperation Organization. So at media briefing on July 4th, India Foreign Secretary Vinay Kwatra, ये हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, they assert that the fact that the Shanghai Cooperation Organization Summit was held virtually in no way signifies, hence insinuate the dilution of objective that we are trying to seek the SCO summits. So he did not disclose, however, any reason for not holding the summits physically or hybrid mode. Mr. Kwatra के failures to give even one credible reason for having a virtual summit indicates that India is moving away from the approach which led to become a SCO full member in 2017. At the stage, PM Narendra Modi still held the belief that
he could reach the modus vivendi with Chinese President Jinping on the continuous issue. Basically ये जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सो बेसिकली अभी आपने देखा होगा कि उनका जो टारगेट था, मिस्टर मोदी ने रिटेट किया इंडिया की पोजीशन के, दैट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। 2 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं आपके, एक तो हमारा BRI इनिशिएटिव है विच इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दूसरा आपका CPEC विच इज़ कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड ये जो कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच वायलेट्स इंडियन सोवरेनिटी सिग्निफिकेंटली, जो यहाँ पे जिनपिंग ने अनाउंस किया एंड द समिट्स कि चाइना विल होल्ड द 3rd बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो जो चाइना के लिए जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, द पाथ फॉर हैप्पीनेस बेनिफिटिंग द होल वर्ल्ड एज पर द वहाँ के जो जिनपिंग ने ये चीज़ बताई। सो BRI के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैव नॉट इनहिबिटेड द एंथुजियाज्म SCO मेंबर्स फॉर इट। सो हमें भी अपने उस चीज़ों से देखना चाहिए कि लाइक इंडिया therefore needs to alive the danger of China integrating Eurasia and shifting it out in the region of Pakistan active support. This is not to suggest that India should endorse the BRI, which is an instrument of Chinese expansionism, but it has to find way to maintain close ties with Eurasia. Certainly the promotion of Buddhist heritage, however laudable to endeavor, will not help to drawing SCO members. सो अभी जो SCO समिट्स हुए उसमें आपने देखा होगा कि जो वर्चुअल समिट्स था, मिस्टर मोदी ने डिड नॉट हैव मीट एनी ऑफ द लीडर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान के जो हमारे शहजाद शरीफ पर्सनली, एंड दैट अवॉइड रिपल्स ऑफ द काइंड ऑफ SCO फॉरेन मिनिस्टर्स दैट इज मीटिंग जनरेटेड इन द गोवा इन May 2023. सो इफ इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि मेनी आइज will now be in the BRICS summit in South Africa in August, where Xi and perhaps Mr. Putin will be present. And Mr. Modi go to the South Africa or prefer to avoid any chance to muddying the water before the great moment in their diplomatic sun, the G20 summit in Delhi in September. So BRIC की जो summit है वो भी होने वाली है आपकी साउथ अफ्रीका में इन अगस्त में, एंड G20 समिट्स कब होगी वो आपकी होगी सितंबर में, राइट। चलो ये आपको देखें यहाँ ब्रिक्स के बारे में मेंशन की हुई है। सो ब्रिक्स में कितने नेशन है? B स्टैंड फॉर ब्राज़ील एंड रशिया एंड इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड ये रिप्रेजेंट करता है अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 23% ऑफ global GDP, right? So we can say the aim to group the project is interest of non-monolithic global south, ठीक है। और इसके समिट्स कब होगी आपकी? पहले इसका ब्रिक्स के जो ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर्स थे वो उसमें था हमारा इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इसलिए इसको बोलते हैं IBSA, राइट। Now government set up a new panel to review all NSO data. So the union government ने constitute किया new internal oversight mechanism for official data, revamping a standing committee on economic statistics set up in the late 2019, soon after the finding from the last round of household survey on consumption, expenditure and employment. So basically यहाँ पे आपको you must have and keep an eye कि what is NSO. NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक नोडल एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन द कंट्री दैट लेज डाउन द मेंटेन norms and standards in the field of statistics involving concept and definition. Which NSO है that consists of Central Statistical Office and Computer Center and the National Sample Survey Office. Basically 2019 में merge कर दिया दोनों को। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इट कंपाइल्स एंड रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एवरी मंथ इन द फॉर्म ऑफ क्विक एस्टिमेट्स, कंडक्ट्स द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल
ASI and provide statistical information to access and evaluate the changes in the growth, composition, structure of the organized manufacturing sector. Make sure ये organized manufacturing sector के बारे में बताता है ना, सो अपनी डेटा रिलीज करता है. पैनल वॉन्ट्स कुनो चीता टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू. अभी रिसेंटली यहाँ पे जो रेडियो कॉलर्स थे उनको बुलाए गए, राइट. एंड जो अभी डेथ्स ऑफ 2 more चीताज एट कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश ओवर द पास्ट वीक. सो जो यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है दैट ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज प्रोजेक्ट चीता इज एंड व्हेन इट वाज गवर्नमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड. Now, what is National Research Foundation and how is the body going to be funded? Is the funding too less when compared to the nation's GDP? How is the NRF planning to make research and development easier? Right. So the Union Cabinet ने approved किया the introduction of National Research Foundation NRF bill in Parliament, placing once again the debate on science and technology funding in the spotlight. NRF है क्या? So the NRF intends to act as a coordinating agency between researchers, जितने various government bodies and industry, and thus bringing industry into mainstream of research. उसको fund कैसे करते हैं? So the NRF will operate with a budget of 50,000 crores for 5 years, of which 28% will be government share, and remaining 22% will come from the private sector. So basically यहाँ पे जो आपका NRF है, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो पार्लियामेंट में है, इसमें NRF जो है फंड करता है. इसमें 28% जो होता है हमारा वो होता है गवर्नमेंट का शेयर, और रिमेनिंग 72% जो होती है प्राइवेट सेक्टर की होती है. सो बेसिकली दिस इंक्रीज इन द नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट सीम्स टू meager, less than 2% of growth, especially if one compares to the GDP and comparatively spanning to other big economies such as US and China. So third हमारा ये सवाल है कि how can the NRF, which is National Research Foundation, facilitate the ease of doing science? First, the time of between applying for a research grant and receiving the money must be minimal, preferably within 6 months. Second ये है कि जितने भी पेपर वर्क है must be digitally processed without sending stacks of paper in hard copies to the NRF. थर्ड है कि जितने भी फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज हैं, पेपर वर्क हैं, अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन द NRF एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कीपिंग द साइंटिस्ट फ्री टू फोकस ऑन रिसर्च. एंड द फोर्थ वन इज दैट कि NRF नीड्स एक्सप्लिसिट स्पेंडिंग गाइडलाइंस अवे फ्रॉम द जनरल फाइनेंस रूल्स. नेक्स्ट, लाइटनिंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर. सो बेसिकली इसमें बहुत सारी डेथ हुई थी. उसके बाद भी so India, is among only 5 countries in the world that has an early warning system for lightning. Only 5 countries in the world. So the forecast is available from 5 days to up to 3 hours. Like, जो बहुत सारे states हैं like Bihar, West Bengal have been demanding that lightning that's to be covered as a natural disasters. That's why government ने अभी, क्योंकि जो states में जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, सो गवर्नमेंट वांट्स कि जो हमारा नेचुरल लाइटनिंग है दैट इज़ बिकॉज बिहार गवर्नमेंट इज़ डिमांडिंग कि जो हमारी लाइटनिंग से डेथ हुई, जो बिजली गिरने से डेथ हुई, वो हमें कवर करो. सो द स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल ने भी डिमांड की है. सो गवर्नमेंट ने भी बताया कि ये जो हमारे एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है. कोरल ब्लीचिंग. So record temperature around the world that have left animal including humans in dire straits, and of them corals are particularly vulnerable. So when the water around them becomes too warm, they are susceptible to bleaching. Bleaching मतलब उसके ऊपर जब corals gone white due to climate change. और white क्यों होते हैं? Because उसके वजह से आपके coral में bleaching नहीं होती, और उसके वजह से आपको पता है कि वो जो aquatic ecosystem है, aquatic ecosystem को balance करने के लिए ये use करते हैं. So there is more to bleaching. However, most corals are home to a type of algae called zooxanthellae, which gives the corals their colors as well as have their symbolic relationship with them. Now, यहाँ पे है आर्मी ट्रूप्स फॉर बायलैटरल एक्सरसाइज उलन बतार. सो उलन बतार कैपिटल है मंगोलिया की, और ये जो जुलाई 17 से जुलाई 31 तक नोमैडिक एलिफेंट. अब ये नोमैडिक एलिफेंट जो है
ये कहाँ पे हो रही है? दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग उलम्बतार, विच इज मंगोलिया कैपिटल. इज एन एनुअल ट्रेनिंग इवेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया held alternately in both countries. The previous edition took place in October 2019 में हुआ था. एंड स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है यहाँ पे बैकलो इंडिया में. सो उलानबतार को उलान बतौर भी कहते हैं, फॉर्मली उर्गा और निशियल कुरुक्वेक, द कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट सिटी ऑफ मंगोलिया, एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द तुल रिवर. ये इंफॉर्मेशन. नोमैडिक एलिफेंट एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कंडक्ट करते हैं ऑल्टरनेटली इन मंगोलिया एंड इंडिया. तो नाम है एक्सरसाइज का नोमैडिक एलिफेंट. ये मंगोलिया एक नेशन बॉर्डर बाय चाइना एंड रशिया का, नॉन फॉर वास्ट ड्रग एक्सपांस एंड नोमैडिक कल्चर, एंड इट्स कैपिटल उलानबतार सेंटर्स अराउंड चंगेज खान, named for the notorious founder of 13th and 14th century Mongol Empire. Now it's time to questions of the day. And why it is important? Because आपको मैं बता दूँ जो questions of the day होते हैं, that gives you an idea कि इसमें आपके एग्ज़ाम में क्या क्या questions होंगे और किस टाइप के questions होंगे. So look it very carefully, right? And then try to give the answer. Here's the very first one. The Enforcement Directorate, ED, is a multidisciplinary organization under the Department of Revenue, Ministry of Finance, and the statutory function of the Enforcement Directorate include the enforcement of which of the following act. Which means that जो ED है वो एक किसके अंदर काम करती है? डिपार्टमेंट रेवेन्यू के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. तो किस किस एक्ट पे काम कर सकती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA, फीमा विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018. आपको इसमें करेक्ट आंसर कोड को फाइंड करना है. बेसिकली इसके आंसर तीनों हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. सो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंडेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज, एंड द स्टैट्यूटरी फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टरेट इंक्लूड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स. जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फीमा, एंड Fugitive Economic Offender Act 2018, and the spawning agency under COFE POSA. इसका मतलब क्या हो गया? The Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities. ये ED जो हमारे 4 चीज़ों पे काम कर सकती है. फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, एंड स्पॉन्सरिंग एजेंसीज अंडर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़. Internationalizing the rupee may provide which are the following benefits to India: limited exchange rate risk, lower cost of capital due to the better access of international financial market, third A, and fourth one A. So in short इसका D आंसर है. So government of India presses ahead with its plans to internationalize the Indian rupee to interdepartmental group IDG of official to Reserve Bank of India have been report caution that internationalization may result in increased volatility in the rupee exchange rate in initial stage. However, the IDG held that the overall benefits of internationalization in terms of limited exchange rate risk, lower cost of capital due to better access to international financial market, high seniorage benefit, and reduced requirement of foreign exchange. Third one, talking about which among the following is the nodal procurement agencies for pulses in India: India's Pulses and Grain Association,
National Pulses Corporation Limited, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) and Food Corporation of India (FCI). So, the right answer is National Agriculture Cooperation Marketing Federation of India (NAFED) is a nodal procurement agency for pulses like Food Corporation of India or FCI is for the rice and wheat. Next one, the World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development is the initiative of Amnesty International, World Economic Forum, African Union and UNESCO. So Amnesty International, if we talk about, it talks about the work for the human rights. So the right answer is UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So D is the right answer. So recognizing the economic importance of culture of UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development was held to address contemporary issues in multicultural societies. The goal was to share a vision for the future of cultural policies and to reaffirm the international community commitment to leveraging cultural transformative power to sustainable development. In the last questions, the Agricultural Market Information System (AMIS) is an interagency platform to enhance food market transparency and encourage international policy coordination in times of crisis was set up by World Bank, Organization for Economic Cooperation and Development, G20 members and World Trade Organization. So the right answer is G20 members. Option C. Agriculture Market Information System is an interagency platform to enhance food market transparency and policy response for food security. इसको लॉन्च किया गया 2011 में by the G20 Ministers of Agriculture following the global food price hikes in 2007 and 8 and 2010. So bringing together the principal trading countries of agriculture commodities, AMIS जो है एक्सेस करता है global food supplies को, focusing on wheat, maize, rice and soybeans, and provides a platform to coordinate policy action in times of market uncertainty. So dear student, this is all about the session and stay tuned. If you are new in this channel, please subscribe the channel as well and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Make sure that meet at 3 p.m. for the deep dive session, and this is a very important session for the Chandrayaan 3. We'll discuss in the very detailed manner. Thank you so much for joining with us. Bye bye and take care.